ठीक. Now the question is this word, thin film. Thin film means some sort of layer. We will answer 3 questions. What is a thin film? Why do we need a thin film? And how do we create the thin film? There are 3 questions to be answered. What is a thin film? Why do we need a thin film? And how is it made and further used? Can you give me an example of a film that you can see in this room? कोई भी film तुमको दिख रहा है? Anything? ऊपर एक layer है किसी का. Anything that you can see? कुछ भी नहीं दिख रहा है. पेंट है ना? वॉल्स सब में पेंटेड. पेंट भी एक तरह का फिल्म ही है. तो क्यों किया है? Why have we done the paint? Purpose क्या है उसका? Protection and aesthetics. देखने में अच्छा रहेगा और अच्छा रहेगा. अच्छा, हम तो पूरे दीवार को चेंज कर सकते हैं. Instead of that, we have only coated the layer. ताकि किसी भी मटेरियल का मुझे अगर प्रॉपर्टी चेंज करना हो तो मुझे उस पूरे मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेंज करने की जरूरत नहीं है. जो भी एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर है, आई कैन चेंज ओनली दैट. उससे मेरा काम हो जाएगा. ठीक है. तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पेंट. उसी तरह से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ films which are applied on the material. तुम लोग मेटलर्जी पढ़ने आए हो. मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग. ठीक है. MEE, metallurgical and materials engineering. So initially we will study about the different metals, and then we will also focus on the different type of materials. But initially is the metals. Okay. Give me an example of a metal. Metal का example दो. ये example दो. Iron, copper, okay. Iron, copper or aluminium, gold, silver. ठीक है. पीरियोडिक टेबल याद है? पीरियोडिक टेबल में can classify the periodic table elements into different types. Can you name some of the types? Metals, there are some metals. There are different types of metals. क्या क्या metals है? Alkali metals, alkali metals. There are non-metals. There are non-metals. Which non-metals example? Any example of a non-metal?
chlorine, bromine. Okay. So you have gases. Gas की कुछ एग्जाम्पल दो. Last bromine, argon compounds around. ग्रुप 4 में जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, germanium, in what category can we put these elements? Group 4. They are called metalloids. फोर वाला जो है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स मतलब देयर आर मैटर मेटल्स और नॉन मैटर. तो इसमें से ये जो दो कैटेगरी है, स्पेशली दिस सिलिकॉन एंड germanium, there are very special type of metalloids and they are used in semiconductor industry and they are called semiconductors. ठीक है, they are called semiconductors. So periodic table में हम लोग कैसे classify कर सकते हैं? We can classify them as metals. Different types of metals, alkali metals, alkaline, earth metals, rare earth metals, non-metals, gases, जो कि ग्रुप 8 में जो है, स्पेशली, ठीक है, and we can classify them as metalloids, group 4. So, thin film, जो नेम ऑफ द टॉपिक है, do we require any sort of thin film for these materials that we have discussed? मान लो मुझे, मेरे पास ये कॉमन मेटल्स, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है. मुझे अगर आयरन के ऊपर कोई फिल्म या कोटिंग भी बोल सकते हैं उसको, हालांकि फिल्म और कोटिंग में थोड़ा सा अलग है. मुझे आयरन के ऊपर कोटिंग देने की कोई ज़रूरत है तो कहाँ पर? मतलब आई नीड टू प्रोटेक्ट. कहाँ पे? Rusting is very good, very good. That means I need to protect iron from rusting, और उसको बोलते हैं, in a broader term इसको बोलते हैं corrosion. If I need to protect the surface of the iron from corrosion, I need to put a coating on it. उसी तरह से कॉपर है, मान लो कॉपर का इस्तेमाल कहाँ होता है? Copper wise electricity conduction के लिए. So if I have a situation where the temperature is very high, मुझे बहुत high temperature system में need to conduct electricity. ठीक है, तुम लोग का जो मोबाइल फोन चार्जर होता है, उसका जो केबल होता है, अंदर तो कॉपर ही होता है, ऊपर क्या होता है? पॉलीमर एक बैंड टाइप का होता है, पॉलीमर एक प्रोटेक्शन होता है, पीवीसी. वाई इज इट दैट? इट इज एन इंसुलेटर. इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग शॉर्ट सर्किट. सो इवन इफ दैट इज नॉट एग्जैक्टली a coating, it is some sort of thing that we are putting on the surface for it to not get affected. ठीक है, इसी तरह से we can classify the film or the material into different categories. इसमें
question is thin film. Technology. To you, you have a layer, and over which you are putting a film. So this is supposed to be a film. And जिसके ऊपर फिल्म किया गया है, we call it as the substrate. So it is always a film and substrate combination. Then we have discussed the classification of materials. Of materials. I'm going to answer 3 questions. What is a thin film? Why do we require a thin film? And how do we make a thin film and further use it? There are 3 questions to be answered. Okay, so what is a thin film? It is a layer or a coating on the surface. Why do we require a thin film? For different reasons. Protection के लिए, aesthetics के लिए. How do we make a thin film? How का आंसर हम लोग बाद में देंगे. First, these 2 questions have been answered. Now, then we have discussed different type of materials from the periodic table. कौन से टाइप ऑफ मटेरियल्स हमने डिस्कस किए हैं? हमने डिस्कस किया है A, the metals, Ne, B, the non-metals, non-Ne, C, the gas, or let's see, D, the metalloids. So this one comes in. So there are classifications जैसे alkali metals, alkaline earth metals, rare earth metals, ट्रांजिशन मेटल्स. अलग अलग तुम लोगों ने प्लस 2 में पढ़ा है इसको. नॉन metals में we are including fluid gases. Basically when we are talking about group 8, the different gases, and metalloids basically हम लोग group 4 को, तो इन सब का this is the basic classification you can have from the periodic table. ठीक है. लेकिन इसके अलावा since your subject is MME, that means metallurgical and materials engineering. So there is not only metal, there is material. So if I say apart from metals, what other type of materials do you know?
ठीक है. So apart from other type of material, तो ये तो अलग हो गया. If I cut it, other type of material that we know is हो गया मेटल. सो तुमने कहा पॉलीमर्स. ठीक है. If I say ceramic, ठीक है, metal there are non-metals. Right. इसमें ये जो अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट सिरामिक एंड पॉलीमर्स. पॉलीमर का एग्जांपल दोगे? एनीथिंग इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन प्लस सम अदर मटेरियल. सो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक या कार्बन, हाइड्रोजन प्लस सम अदर मटेरियल. तो लोगों ने स्टेनलेस स्टील के बारे में सुना है. और लेट्स से स्टील. What is the steel? Out of these categories, can we put steel in any of these categories? Steel is an alloy. Steel is an alloy. Alloy मतलब बेसिकली वन मेटल, उसमें हमको वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ अदर मेटल है. जैसे कि स्टील में बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल. बेसिकली एक तो आयरन हो गया, दूसरा क्या जानते हो क्या है? दूसरा कार्बन. कार्बन, आयरन एंड कार्बन. इन दोनों को मिक्स करके अलॉय करके हम लोग बनाते हैं स्टील. प्लस दूसरे एलिमेंट में डालते हैं. बट बेसिकली दीज आर द टू एलिमेंट्स which are used in making steel. तो another class of material is this one, alloy. यहाँ पे metals and alloy है. ये metals के अंदर ही आता है, मतलब since अच्छा, सेरामिक कैसे बनता है? सेरामिक का एग्जाम्पल, एनी सेरामिक दैट मीन्स जो हम लोग कप चाय पीते हैं, दैट इज अ सेरामिक मटेरियल. पीरियोडिक टेबल में सेरामिक मटेरियल होता है, तो फिर कैसे बनता है? हाँ, बट हाँ, तो इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनली अ मेटल and a non-metal. Alloy जैसे टू मेटल का कॉम्बिनेशन है. सेरामिक इज बेसिकली अ मेटल एंड non-metal. non-metal मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन. So if I say Al 2O3, that means it is formed by a metal and a non-metal oxygen. So there are a few more examples, like let's say titanium is a metal. ठीक है, इसके साथ हम लोग नाइट्रोजन डालते हैं.
titanium nitride, the titanium watch golden sort of color. Titanium nitride. This is a ceramic. Okay. So, there are different types. Alumina here. So we have ceramic formed out of a metal and a non-metal. You have an alloy formed out of two metals. You have metalloid, which are basically group 4, used as semiconductors. You have polymers, C and H. Okay, so basically this is the classification of the materials. इसके अलावा बहुत सारे और classification है. If you would like to classify in terms of scale or size, तुम लोगों ने ये मटेरियल का नाम सुना होगा, नैनो मटेरियल सुना है ना? नैनो मटेरियल. एक्चुअली ये सब्जेक्ट थोड़ा सा एडवांस सब्जेक्ट है, इसको पता नहीं थर्ड सेमेस्टर में क्यों डाल दिया. इट इज सपोज टू बी इन द हायर सेमेस्टर. बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होने के बाद जाके एक्चुअली सीख लेंगे. सिंस इट इज अ 4 क्रेडिट कोर्स, तो 60 क्लासेस मान के चलो. और ये वाला जो सेमेस्टर होता है बेसिकली जुलाई टू दिसंबर, इसमें छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा होती है कि टाइम नहीं मिलता. सो क्योंकि तुम्हारे दूसरी क्लासेस तक स्टार्ट शुरू नहीं हुए ना, तो शुरू में जितना भी दूसरी क्लासेस होते हैं हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, बिकॉज इसके लिए थोड़ा बेस होना थोड़ा ज़रूरी है. बिकॉज अनलेस यू हैव द बेसिक आइडिया ऑफ दीज थिंग्स, अचानक से मैं अगर फिल्म शुरू कर दूँ तो डिफिकल्ट होगा. तो लोग धीरे धीरे हम लोग फिल्म भी पढ़ेंगे, फिल्म कोडिंग भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसके पीछे जो बैकग्राउंड ज़रूरत है वो ऑल्सो कवर है. तो अभी तक इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई हैव टोल्ड जस्ट नाउ? या एनी डाउट? कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क. 5 मिनट जस्ट देख लो. Let's see what we have has been covered to this time. Just 15 minutes.